state state Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. See, Gauss's theorem is used to find electric field intensity. Ampere's circuital law is used to find magnetic induction. Statement. The line integral of magnetic field or induction are one and the same. Line integral of magnetic field over closed loop is always equal to the permeability, that means mu naught, of free space times current enclosed by that loop. That means integral of B over length, that is B bar dot dl bar over closed loop, is mu naught times current enclosed by that loop. That means if these are two current carrying conductor, if I draw Amperian loop, then integral of B over this entire loop. This loop is nothing but small part will be length. So that's why we say B dl. Hello? Yes, sir. dl मतलब ये लेंथ हो गया ना, इसका लेंथ dl 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 ऐसा, और ये कैरिंग कंडक्टर. तो इसके अंदर जितना भी करंट आएगा उसका म्यू नॉट टाइम्स. So if both current are in same direction, it will become mu naught I1 plus I2 is line integral of B over the closed loop. Followed this statement? Using Yes, this, we will find magnetic induction near long conductor, solenoid, torque. This is second part of the chapter. Please write down Paul. This week you will have one test on Thursday of magnetic field. done, sir. Okay. So, इसका यूज करके we are finding magnetic field near long straight conductor. Magnetic field and induction are same. Again, I am repeating. Magnetic field near long straight conductor using Ampere's circuital law. Ampere circuital law. So consider a conductor carrying current I as shown in the figure. P is a point near the conductor at distance R. Draw an Amperian loop with center on the wire having radius R. It will pass through point P. Let B bar be the magnetic induction at point P. So
DL bar is in the direction of B only. So this is small length DL bar, and B bar is, you can see, perpendicular but inward by right hand thumb rule. So imagine this is conductor, this is the point, so field will be cross, no, inward. But how cross? It will be perpendicular and inward. So B and DL are in same direction. ये DL और AB same direction. So can I say by Ampere's circuital law, we can say line integral of P bar dot DL bar is mu naught I. So therefore B DL cos theta is mu naught I. B and DL are in same direction. So B DL cos 0 is mu naught I. P is constant. Integration of DL is mu naught I. So B, what is total DL of entire loop? Can I say 2 pi r? Yes. Yes, sir. So B becomes mu naught I upon 2 pi r. By Biot-Savart's law also I got same formula. For infinite long conductor, B is mu naught I upon 2 pi a matlab r, same. Have you followed now? By Ampere's circuital law? Yes, sir. Now, just one theoretical question. Gauss's theorem gives us what? Electric field intensity. And Ampere's law, magnetic field induction or magnetic field. Clear now? Yes. Gauss's से electric आएगा, इससे magnetic आएगा. Please draw diagram and copy till end. Next class I will start with MCQ. After that 10-15 MCQ, एक theory ammeter voltmeter वो भी करना है. Ammeter voltmeter cyclotron, that will complete this chapter. Done, sir. Everybody is done. Shall I clear now? Yes, sir. Now I want magnetic field of a solenoid and then toroid. What is solenoid? It consists of a cylinder wounded with coil along its length. That means length of coil is very large as compared to this diameter of the solenoid. Current enters from one end and leaves from another end. Okay? Hello? Yes, sir. Imagine I cut it vertically. तो ऐसा आएगा ना थोड़ा. अगर vertically cut कर दिया तो ऐसा दिखेगा ना, ये पार्ट नहीं दिखेगा. देखो इसको कट कर दिया तो ये वाला पार्ट और इधर का ये वाला पार्ट ऐसा ये दिखेगा और थोड़ा वायर का थिकनेस दिखने वाला है ना. इधर से करंट एंटर होएगा और इस साइड से बाहर आएगा, बराबर. Yes, sir. सो व्हेन इट इज कमिंग आउट ऐसा, तो ये डॉट 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 दिखा सकता हूँ ना इधर, और इधर क्रॉस 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 बोल सकता हूँ ना. नहीं समझ में आया? इमेजिन आपका बुक एक सिलेंडर है. Just fold it if you have the book in front of you, then you will be able to understand very nicely. I am also folding the book. So suppose I am cutting it vertically, मतलब बुक को थोड़ा खोल दो ऐसा आधा, तो आपको थिकनेस दिख रहा है क्या? थिकनेस दिखा?
हाँ सर। टॉप साइड पे से वायर आएगा बाहर, बाहर आया मतलब डॉट, और लोअर साइड के अंदर घुसेगा ना ऐसा। यस सर। इमेजिन आपने ये फिरकी देखा है क्या, जो पतंग उड़ाते हैं। Yes. हाँ, उसको कट कर दिया बीच में से, तो एक वायर ऊपर से आके फिर नीचे जाता है ना ऐसा, मतलब ऐसा हाँ. ऐसा वायर जाता है ना, इधर से आता है और ऐसा ऐसा जाता है ना, ऐसा आके गया आके गया। तो ये आने वाला है उसको डॉट, जाने वाले को क्रॉस, तो ये डॉट 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 क्रॉस 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 दिखा है करंट का डायरेक्शन। दिस मच क्लियर? यस सर। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डॉट, इनवर्ड और आउटवर्ड? आउटवर्ड। करंट बाहर है, देखो अभी कर्ल्ड फिंगर, थंब आपका बाहर है, थंब बाहर है बराबर, आउटवर्ड करंट मतलब हाँ. थंब बाहर ना, तो मेरा ये कर्ल्ड फिंगर ऊपर से जाके फिर नीचे से बाहर आता है ना ऐसा, मतलब देखो ऐसा जाके फिर ऐसा बाहर आएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना फील्ड, है ना? नहीं समझा? यस सर, समझा। समझा। देखो टू इमेजिन दिस, आपको एक वापस वैसा रखना पड़ेगा, एक पेंसिल, पेंसिल मतलब अपना करंट कंडक्टर है जो बाहर की तरफ है, थंब अपना फेस की तरफ लेके आओ, तो कर्ल्ड फिंगर ऊपर से जाके फिर नीचे साइड से राइट जा रहा है ना, राइट जा रहा है क्या नहीं? यस सर। तो ये राइट गया वाला फील्ड है मेरा। आप सबको ये फील्ड का समझा पहला? आर्यन सिंह समझ में आया फील्ड का कॉन्सेप्ट? यस अंकिता, राहुल? Yes, sir. हाँ, अभी ये लोअर वाला से भी इमेजिन करो, इधर से फील्ड अंदर जा रहा है बराबर, मतलब एक पेंसिल लिया है मैंने हाथ में, मेरे हाथ में तो पेन लिया है मैंने, थंब मैंने नीचे दिखाया, टुवर्ड्स मतलब इनवर्ड दिखाया, तो मेरा पाम नीचे साइड है, तो नीचे से फिर जाके ऊपर से वापस राइट ही जा रहा है बराबर। यस सर। सो प्लीज ड्रॉ दिस लाइन एंड ये फील्ड का डायरेक्शन, मतलब ऐसा आया फील्ड इन सोलोनॉइड, आधा कट करने के बाद अंदर ऐसा जा रहा है, ठीक है? प्लीज ड्रॉ, तो एकदम पक्का समझ जाएगा। wherever direction comes वो थोड़ा imaginary होता है, because you have to analyze and have the feel. थंब बाहर, कर्ल्ड फिंगर ऊपर वाला साइड से ऊपर जाके फिर नीचे टर्न राइट को मारा, और लोअर वाला साइड थंब इनवर्ड नीचे से ऊपर आके फिर से राइट गया। चलो, if you have done both the diagram, then I am rubbing to get the expression. Done, sir. डन सर। Okay. Drawn na? Or you want me to undo that and bring it back? डन ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, this is that solenoid का diameter or area of cross section. If we imagine Amperian loop, A, B, C, D, this is the field inside B bar. So by length is L, Ampere's circuital law, line integral of B bar dot dl bar is mu naught times current enclosed. देखो ये कॉइल ना n टन का था, एक टन में करंट I तो ऐसा मिलके NI होएगा ना, ओके? ये NI समझा? यस सर। एक टन में I, तो ऐसा we are having n ton, so therefore I wrote NI. Now integration of B bar dot dl bar is from A to B plus B to C plus C to D plus D to A. B bar dot dl bar, B bar dot dl bar, B bar dot dl bar, B bar dot dl bar. Now this first wala A to B, what is angle between BDL? 0? जीरो। 0. And for BC, what is angle between BDL, B and DL? B तो 90. ऐसा है 90, very good. Here
CD is outside, so B is 0 into DL into cos theta. Outside field is negligible, so we write 0. A to D, again perpendicular, na? A to D, Yes, sir. so it 90. is BDL cos 90. Yeah. Got it this much? So first wala Yes. will be B integral of DL. This is 0 plus 0 plus 0. I hope you followed. Will this followed? Yes, sir. Yeah, please copy this much. Done, sir. Okay. Can I clear this from the screen again? Yes, sir. So I can say therefore B is integration of DL is total length, na, of the loop inside. It is L. So therefore from 1 Mashu. Hello? No. हाँ हाँ नहीं आप अच्छा आपने वही भेजा है इससे और उस होल्डिंग स्टेशन इसमें मिलेगा ना आपको जो आपने ये पूरा ग्लोबल रिपोर्ट देखो आपको मैंने फोटो भेजा है उसमें पूरा होल्डिंग स्टेटमेंट है ना पूरा एक ईयर का दोनों का है 4 पेज भेजा है हाँ देख लो आप ठीक हाँ हाँ नहीं मैंने वही तो सामने उनको भेजा तो वही मेरे को आया अब अभी आपको क्या क्या चाहिए लेजर और बस ना ठीक है मांगेगा हाँ हाँ अच्छा पूछता हूँ तो फिर, ठीक है ठीक हेलो from 1 we get BL is mu naught Ni. So B is mu naught NL upon I. Let number of turn upon length is denoted by N. So B is mu naught Ni. Any doubt? ये कॉन्सेप्ट हमको बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए लगने वाला इन एसी सर्किट ट्रांसफॉर्मर करते समय
सबको समझ गया है फॉर्मूला सोलोनॉइड वाला? Yes, sir. या प्लीज कॉपी दिस मच. So we did magnetic field near long straight conductor by Ampere's law. Now for solenoid. So this is magnetic induction at any point inside the solenoid. This one is done. Shall I clear it off? Yes, sir. Right. Note. At any point inside solenoid, B is mu naught Ni, where N is number of turns upon length. At ends of solenoid, B dash equals to half of B, which is half of mu naught Ni. Third, at any point outside solenoid, field is 0. This 3-point right as a note. सर एंड पे हाफ बी क्यों हुआ? एक साइड से एंटर हो रहा है और एक साइड से लीव हो रहा है ना, तो टोटल बी एक साइड से हाफ है, एक साइड से हाफ है. हेलो, सर नहीं समझा. देखो ऐसा है, सपोज इमेजिन किया ऐसा है, ये फील्ड है, तो ये साइड से हाफ आता है ना ऐसे, और इधर से हाफ आएगा ना ऐसे, तो ये Yes, सब sir. मिलके इधर होता है. तो एक के साइड के कॉइल की वजह से ये लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है उसका. Okay. टोरॉइड का देख लेते हैं. टोरॉइड, टोरॉइड इज डोनट शेप सर्कुलर रिंग, भी अंदर हॉलो रहता है, on which coil is wounded on its circumference. So now if I just check here,
wire will come from top and go inside, na? Hello? Wire will Yes, come sir. from top and go inside. तो अंदर ये क्रॉस क्रॉस के जैसा रहेगा ना ऐसा इधर. फिर if I assume this Amperian loop, this time line integral of b bar dl bar is nothing but mu naught. The Amperian loop is at distance r लिया है. And again Ni is the current, total current, because one loop is carrying current I ऐसा अपने पास 1 2 3 n है तो Ni लिखा. So B dl cos 0 का इंटीग्रेशन इस म्यू नॉट Ni. अब ये पूरा dl 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 एम्पीरियन लूप बना दिया फॉर दिस वायर गोइंग एंड कमिंग डाउन. तो ये मुझे 2 पाई r मिलेगा ना dl, है ना इस बार 2 पाई r. Yes, sir. So mu naught Ni upon 2 pi r. So again B you can take mu naught Ni, where n is number of turns upon circumference rather than taking length. बस यही खाली change है solenoid और इसमें. That was number of turn per unit length. This is number of turns upon circumference. Just draw this toroid का छोटा सा diagram and then complete till end. Done, sir. Next write ammeter. One second, one second.
Okay. Now we will discuss ammeter, how it can be converted to increase the range. So ammeter. अब एक छोटा सा पार्ट रह गया है मूविंग कॉइल, वो मैं एंड में बताता हूँ, बट जस्ट लिसन. द मॉडिफाइड form of moving coil galvanometer used to measure electric current is called as ammeter. So I think use of ammeter, you got idea, it measures what? Electric current. To measure electric current, how ammeter should be connected? Series or parallel? Hello? Series. Series. Why not in parallel? In parallel, current gets divided. In series, Divided. it remains constant. Yes. So imagine this is one resistance. अभी कुछ लिखना मत, खाली समझो. Resistance है R 10 ohm. Here I have a battery of 10 volt. How much current will flow through this circuit? 1 ampere. Naturally 1 ampere, because I is voltage upon resistance, 10 upon 10, 1 ampere. But when I connect this instrument, that is ammeter, now how much it should record? Same, na? Yes. But suppose this ammeter has coil of very large resistance, 9990. Now what will be total resistance when I connect this? 10,000, ना? Yes. मतलब जब ये नहीं था तो only 10, when instrument connected 10,000 हो गया. Now what will be current? 10 upon 10,000, है ना? Yes. Can I say 10 raised to minus 3 ampere, which is nothing but 1 milliampere? So without instrument 1 ampere flowing, with instrument 1 milliampere flowing. तो instrument faulty हो गया ना ये. हाँ. तो ऐसा क्या करूं कि इसका रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाए? Connect something in parallel. In parallel, effective resistance is lesser than least. I think you know this. So 9990 के साथ में I connect very small resistance 0.01, तो इसका effective 0.01 से भी कम होगा ना? Yes, sir. तो ये resistance जो पहला 10 plus 9990 हो गया will be 10 plus something less than 0.01. So nearly it will remain 10 or not. Yes, sir. So that means now my current, which is 10 upon same resistance 10, will be maintained at 1 ampere. So can I say by using shunt, I can make the resistance of ammeter as small as possible? Yes. So to convert moving coil galvanometer into ammeter, ammeter का resistance must be made as small as possible. Ideally 0, practically as small as possible. कौन करेगा? Small shunt resistance of low value. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. सपोज पहले से वो मॉडिफाइड है, मतलब आपने शंट कनेक्ट करके मॉडिफाई करके रखा है, सो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज IG. एग्जांपल लेता हूं 2 एम्पियर. आई वांट टू मेजर 10. तो ये 2 का जगह पे 10 पास हुआ तो ये गैल्वेनोमीटर का कॉइल I स्क्वायर RT से हीट डेवलप करेगा. इट्स कैपेसिटी वाज 2 स्क्वायर RT. यू आर पासिंग 10 स्क्वायर RT. तो जल जाएगा ना, ये मेल्ट होएगा ना. हाँ. तो मैं क्या करूं? एक्स्ट्रा करंट को मापना तो है मुझे आई मतलब 10 मापना है, IG2 था, तो एक्स्ट्रा करंट को डाइवर्ट कर दूं ना किधर से, तो दैट किधर से तो भी इज अवर शंट ऑफ एप्रोप्रिएट वैल्यू विच कैन टेक करंट ऑफ I माइनस IG खुद के ब्रांच में, ये शंट. फिर ये पूरा बन गया मेरा नया एमीटर which can record current up to I by carrying extra current through shunt. Are you getting me? Yes, sir. So my now job is, what is that shunt का value in terms of G, IG, I. फिर से एक बार सुन लो.
The modified form of moving coil galvanometer used to measure current is called as ammeter. You need not write all this because ये 12th के लिए चलेगा. To measure current, ammeter should be connected in series. If the resistance of ammeter is very large, then resistance of circuit will increase, hence current will decrease, but current should remain unchanged. Thus, resistance of ammeter must be kept as small as possible. This can be done by connecting shunt of low value with galvanometer resistance. Clear? फिर मैं लिखाता हूं. हेलो, इधर तक समझ में आया थियरी? Yes, हाँ sir. सर. Also for small current Ig, galvanometer may give full scale deflection. That means its device is getting deflected fully. So to increase the range, shunt of low value if connected will divert the current through its path. और इधर मैं लगा दूंगा अभी ये deflection वाला device. So also for small current, galvanometer may give full scale deflection. Hence its range must be increased. Both these purposes मतलब उसका effective resistance कम and range ज़्यादा can be served by connecting shunt in parallel with galvanometer resistance. Now I want its necessary formula. So let Ig be full scale deflection. FSD मतलब full scale deflection. Current flowing through galvanometer G. Let S be the shunt required to measure current I. Since galvanometer and shunt are in parallel, therefore voltage across galvanometer is voltage across shunt. तो आप हेडिंग एमीटर लिखो, ये डायग्राम बनाओ और इतना कॉपी करो, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूं. Done, sir. Now Vg and Vs are same because galvanometer and shunt are in parallel.
Current through galvanometer का formula voltage is nothing but by Ohm's law, Ig into G, and this is I minus Ig into shunt. So I can say shunt equals to Ig into G upon I minus Ig. If I divide numerator and denominator both by Ig, तो एक तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दूसरा Ig डिवाइड बाय Ig न्यूमरेटर as well as denominator. So we get S as G upon I upon Ig minus 1, that is G upon N minus 1. Second, where N means total current upon Ig का fraction. These two formulas write down, but I will be using the other one, third, which I will explain just now. Next class we'll start with MCQ, and then at the end I will do cyclotron and moving coil galvanometer का construction, working, sensitivity. मतलब एक lecture theory का पूरा बाकी है, but I will first start with MCQ so that we can proceed with MCQs. Write this much, but as I told, one more modified form I am giving you. Done, sir. Since S equals to Ig into G upon I minus Ig, so Si minus Sig equals to Ig into G. Therefore, Si is Sig plus Ig into G. So Si is Ig into S plus G. Therefore, S upon S plus G is Ig upon I. I will be using this formula always to get shunt. This I will be using. Ig upon I is S upon S plus G. देखो I बड़ा, इससे डिनोमिनेटर ज्यादा रेजिस्टेंस S plus G. Please copy this third one from here. I'll be using this whenever we want shunt or whenever we have to convert galvanometer or ammeter of higher range ammeter.
Done, sir. Okay. Now voltmeter. To measure potential difference, voltmeter is connected in parallel with external resistance. So now if you imagine, this is the resistance R, a battery of 10 volt, same 10 ohm. Now how much current will flow? 1 ampere. Yes. What will be potential drop across this resistance R connected between AB? What will be potential? V 10. equals IR 10 volt. Correct. That means till the current going inside this resistance is 11111, it will be 10 10 10. So to measure this, if I connect here voltmeter V, suppose voltmeter has very low resistance, तो ज्यादा current इधर divert हो जाएगा ना, because current follows path of least resistance. So should current get diverted or all current should go in that 10 ohm? Diverted. नहीं बेटा, डाइवर्ट हो जाएगा तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा ना, इसके अंदर का तो कम मापेगा ना वो दो पॉइंट के बीच में. हाँ, sir. सो करंट शुड नॉट गेट डाइवर्टेड इन वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या चाहिए? एज हाई एज पॉसिबल ना. Yes. Yes. सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इफ इट इज वेरी हाई तो सब ये एक्सटर्नल में जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा. सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी एज हाई एज possible for ideal voltmeter. Resistance of voltmeter must be infinite, ideally, practically as high as possible. तो जरा इतना लिख लो, फिर मैं वो रेजिस्टेंस का वैल्यू ढूंढता हूं which should be connected to give the minimum diversion and maximum voltage. Yeah. Yes, sir. हाँ. क्या? नहीं 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 नहीं, वो बहुत पहले भी बात हुआ है मुझे. Yes, done. Yes, sir. Okay. ठीक है. तो ये जो रेजिस्ट, सपोज दिस इज अ गैल्वेनोमीटर of resistance G, can record maximum current voltage Vg and current flowing through this is Ig.
I want to record more current, more voltage, that is V. तो वापस सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो तो करंट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज ये खा लेगा ना. So this becomes modified form of galvanometer or voltmeter of increased range. ये पूरा वोल्टेज V माप सकता है, पहले VG माप रहा था. सो सीरीज रेजिस्टेंस दो काम करता है, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाया, ऑल्सो इट कैन रिकॉर्ड मोर वोल्टेज. आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट इज R का वैल्यू. So we can see from this figure total voltage is across galvanometer and across series resistance. This is Ig into G plus Ig into R. So V equals to Ig into G plus R. Therefore V upon Ig is G plus R. So R equals to V upon Ig minus G. So using this formula, we can find value of series resistance to measure voltage V by that voltmeter. Draw this diagram and then write till this. I am interested in this formula only in the MCQs. पूरा लिख लो अच्छे से. Done, sir. Okay. Everybody is done? No, sir, 1 minute. इतना थियरी अच्छे से पढ़ना. कल लेक्चर नहीं है, पर मैं आपको अभी 1 घंटे के बाद एमसीक्यू शीट भेजने वाला हूँ. उसमें से फर्स्ट 5 खाली ट्राई करना इस ये चैप्टर का. पूरा थियरी प्लीज मेक इट परफेक्ट, बिकॉज वंस योर थियरी एंड फॉर्मूला इज स्ट्रॉन्ग तो एप्लीकेशन बिकम्स इजियर. दोनों ट्राई करेंगे तो डिफिकल्ट है. फॉर्मूला भी मालूम नहीं, एप्लीकेशन भी मालूम नहीं है तो नहीं कर सकते. Done, sir. So please practice this much and be ready for Wednesday's lecture, where I will start with MCQ and complete